Hello, learners. Welcome to my channel, Learning Made Easy. It's been a long time since I posted a video, and many of you were asking why am I not posting. So, here it is. This is a much recommended video, the sample Hindi question paper for the year 2024-25. Okay, so this year, as you know, a really sad news for us is that grammar portion is not going to be in MCQ. You have to write the answers for that. So that is what the information till now is. Maybe it can change. We can hope so. We can pray for that. Anyway, in this video, I'll be covering the question paper pattern, marking schemes, some tips for writing the exam, and also as much as possible, I'll giving you the answer. I'll be giving you the answer for all the questions. Okay. So let's begin. As you can see here, the first part of your question paper, that is Khandka, has passage. There will be two unseen passages. Both of them are to be attended. Okay, as you can see, it is for 7 marks, and here I'll be first explaining the first passage. Now you might feel that I'll just skip this part because it's not like the same question is going to come. But let me tell you, there are possibility that same question might come for unseen passage. Another thing is this particular passage has a lot of words which are current topics which can come in your writing section. So it will be better if you listen to them, you'll get to know the meanings of some difficult words on current topics. So, okay, now let's begin. I'll be reading the passage, the first passage. दुनिया में इस समय दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है. Here दिन दूनी रात चौगुनी means actually 2 days and 4 nights. The real inner meaning of this muhavra is very quickly. Okay? प्रगति हो रही दुनिया में. प्रगति, progress. So today in world very quickly progress is happening. कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीज़ें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही है. So some things which we thought was asambhav, impossible, a while back, now because of प्रौद्योगिकी means technology, सरलता से very easily परिणाम तक पहुंच रही है. We are getting the end result. We get to see many inventions because of प्रौद्योगिकी. एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था. What is संगणक? Computer. Computer, which we say very easily in English, is also called actually संगणक. Okay, so संगणक के विकास ने means development of computer had done in the field of प्रौद्योगिकी technology. क्रांतिकारी बदलाव means revolutionary changes. अब कृत्रिम भौतिकता ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है. Now what is कृत्रिम बौद्धिकता? It's a very current topic, artificial intelligence. So artificial intelligence has covered from चिकित्सा से लेकर हथियार के निर्माण, चिकित्सा treatment, हथियार के निर्माण, manufacturing weapons. So from treatment to manufacturing weapons, every field is going to be covered by AI, artificial intelligence, which were earlier covered by computers and robots. Okay, so computer और robot के प्रयोग को नया आयाम दिया है, आयाम, dimension. So this AI is going to give a new dimension to this. पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है. Now in paramпरिक computer world that we have today, that is traditional computers, now there is a new अनुसंधान. What is अनुसंधान? Research. Now what is that? Let's see. जिसका नाम है quantum computing, यानी अति सूक्ष्मता का विज्ञान. So now there's a new research, new invention, quantum computing. It is a study of अति सूक्ष्मता, means very finest or very minutest particles. भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है. ऐलान, announcement. Okay, so now even in Bharat, even in India, they have announced, there'll be a great speedy progress of quantum computing. भौतिक शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्यूटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही है. What is भौतिक शास्त्र? It means physics.
Okay, in physics also we can see there is aseemit sambhavnaएं, unlimited contributions are going to be seen of this quantum computing. शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचि का विषय हो सकता है. शोध means research. So from the point of view of research, this topic, that is quantum computing, can be of ruchi, of interest. विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा आंकी जा रही है. विशेषज्ञ मीन्स एक्सपर्ट्स. According to experts, these quantum computers are going to be more or far better than supercomputers. इस क्वांटम कंप्यूटिंग या मैकेनिक्स की ख़ास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता. So now here they are telling, according to Indian science and also Paschimi Vaigyanik, Western scientists, they say that without knowing the Bharatiya Bhavvadi Siddhant, what is that? Indian principles, Indian idealistic principles. So without knowing the Indian idealistic principles, it is not possible that we can assess the minutest particles. That is in quantum computing. Okay? क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम भौतिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय हैं. Now, this quantum computing or artificial intelligence, these are all actually going to give an existence to our Indian principles. That's all. I don't know how much you could understand the passage. I know it's a bit difficult, but what to do? This is, the kind of sample paper that we have received, but let's pray for an easier one in your boards, okay? Okay, so the first question, I'm going to discuss the answer also. उपर्युक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? विषय वस्तु, on what main topic or what theme is it depending? कृत्रिम भौतिकता, दुनिया के विकास पर, संगणक के प्रयोग पर, मानव अस्तित्व पर. Now the answer is 2, दुनिया के विकास पर. It is depending, the theme is development in the world. Because we cannot say it's only on Kritrim Bhautikata or only on Sanganak ke Prayog. Many topics are covered, right? Computer, supercomputer, quantum computing. Many are there. Artificial intelligence. So overall it is on development of the world, option 2. Next question. दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है. पंक्ति से आशय है. What is the meaning of this line? So I told you very quickly, right? बहुत ही तेज़ी से विकास, रात दिन काम करना, चारों तरफ विकास होना, बहुत अधिक विकास होना. It is option 1. बहुत ही तेज़ी से विकास. Very quickly development. Next question. निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनकर लिखिए. Now what is kathan and nishkarsh? Kathan means a line from the passage. Nishkarsh is an inference to that. Okay, a further explanation. Let's see. Kathan is quantum computer की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी अधिक है. Means quantum computers are better than the supercomputer. क्षमता means efficiency. Okay. निष्कर्ष इससे विकास की गति को अधिक बल मिलेगा. Means speed in development will be more stronger. बल मिलेगा. बल means strength. See, these words are not actually used for this passage only. Don't think like that. If you know the meanings of these words, it will be useful somewhere, in the question paper. Maybe in writing section most often. Let's look at the option. कथन सही है लेकिन निष्कर्ष गलत है. कथन निष्कर्ष दोनों सही है. कथन गलत है, निष्कर्ष सही है. कथन और निष्कर्ष दोनों गलत है. Any guess? Yes, it's option 2. कथन और निष्कर्ष दोनों सही है. Okay? Okay. So let's move on to the next passage. So here you saw how you're going to get 7 marks for this particular passage. Now we go on to our next passage, which is again for 7 marks. सूरज हमारी ऊर्जा की सारी कमियों को पूरा कर सकता है. ऊर्जा means energy. सूरज, sun. कमियाँ, whatever is lacking. So it says sunlight can actually overcome or help us overcome all our
laziness or whatever we feel, it helps us to produce energy for us, which is required for every human being. यह एक विशाल रिएक्टर जैसा है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाया जाए। Now वैज्ञानिक scientists say that we should make a कृत्रिम सूरज, an artificial sunlight on earth. Now we know we have solar energies, right? इसके लिए ये फ्यूजन टेक्निक पर काम कर रहे हैं। Now there is a fusion technique where they actually, I don't know what exactly it is, it's actually they combine many information, okay, to get the end result. That is fusion technique. Fusion, it's a mixture of different things. सूर्य की चमक इंसानों के लिए हज़ारों साल से आश्चर्य की वजह रही है, लेकिन करीब 100 साल पहले नई खोज द्वारा पता चला कि सूर्य की बेशुमार ऊर्जा का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन है. So now they're saying that actually the sunlight or the energy produced from sunlight is always been something surprising to people, that how is this possible? How is it giving us energy? But now they have found out that it is with the help of nuclear fusion. Okay, this is also a process where, I don't know exactly, but where there is a combining of some light particles and they release a heavier energy or something like that. Okay, you can google it and check yourself. फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर धरती पर उसी तरह का फ्यूजन कराया जाए तो सूर्य में हो रहा है जो सूर्य में हो रहा है तो बहुत कुछ बदला जाएगा और लोगों को बेशुमार ऊर्जा मिल जाएगी. So they found out if we bring this sunlight on earth, okay, people can get energy which will be very much beneficial for them. आज दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में ईंधन परीक्षण को शुरू कर दिया है. Okay, so they are using fuels, ईंधन परीक्षण, fuel testing now for in the nuclear fusion. वैज्ञानिकों की एक टीम फ्रांस में फ्यूजन रिएक्टर को ताकत देने के लिए हाइड्रोजन के एक अत्यंत दुर्लभ रूप की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं. दुर्लभ रूप, rare form of hydrogen is also being used in testing, okay, for fusion reactor. अगर उनका यह परीक्षण सफल होता है तो इससे दुनिया को क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा जरिया मिल जाएगा. Now if their experiments are successful, they'll get a clean energy. इससे न केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा. Now what is जीवाश्म ईंधन? Fossil fuel. So we depend on fossil fuels, so that dependence will decrease and it will be beneficial for us. Why? Because these fossil fuel energy releases a lot of impurities into the environment. Okay, it is making our environment impure. Now that will not be there. The environment around us will be clean. न्यूक्लियर फ्यूजन लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहने वाले रेडियोधर्मा अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता. Now radioactive chemicals that are released normally will not be released with the help of nuclear fusion. यह अक्षय ऊर्जा से भी अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है. अक्षय ऊर्जा means eternal energy. So this nuclear fusion is very much विश्वसनीय, trustworthy than the what was that? Okay, I'm also confused with the words here because all these difficult words. अक्षय ऊर्जा या इटर्नल एनर्जी. नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण है. Here नाभिकीय संलयन is nuclear fusion only, okay? They have just used another word. क्योंकि यह तुलनात्मक रूप से काफ़ी स्वच्छ है. It's very clean, this nuclear fusion is very clean. It keeps the environment very clean. तुलनात्मक means comparatively. Tulna is a very, very common word in your Hindi subject here. So please remember tulna means comparison. Comparison, okay? अर्थात यह कम कार्बन का उत्सर्जन करती है, means less carbon will be released. साथ ही यह तकनीकी दक्षता के साथ 100% स्वच्छ भी है, 100% clean. Finish. Let's move on to the question. First question. उपरोक्त गद्यांश की विषय वस्तु क्या है? What is the theme? सौर ऊर्जा means solar energy, okay? स्वच्छ ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रेडियोधर्मी ऊर्जा. You tell me what is the answer? It is सौर ऊर्जा, solar energy. They are telling how solar energy is going to be beneficial if you bring that on earth, okay? Second question. निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए. दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनकर लिखिए. कथन: न्यूक्लियर फ्यूजन और ऊर्जा से भी विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है. कारण: इससे दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी.
यू कैन लुक एट द ऑप्शन कथन सही है, कारण गलत है, कथन कारण दोनों गलत है, कथन सही है, कारण उसकी सही व्याख्या है, कथन गलत है, कारण सही है. They have given the sentence and the reason. It's actually option 3, कथन सही है, कारण उसकी सही व्याख्या है. That is, the line is correct and the reason given is also actually explaining it correctly. थर्ड क्वेश्चन, वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाने के पीछे क्या कारण है? What is the reason that they are making the artificial sunlight on earth according to वैज्ञानिक साइंटिस्ट? फर्स्ट वन, ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए. सेकेंड, पर्यावरण के लाभ के लिए. थर्ड, प्राकृतिक ऊर्जा संग्रह के लिए. फ्यूजन तकनीक को सिद्ध करने के लिए. करेक्ट आंसर इज ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए. ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. दैट इज इन ऑर्डर टू remove the lacking of energy. Okay, human beings here on earth feel that we don't have enough energy, so the energy that we get from sunlight, we can, if you bring it on earth, we will get more energy. So that is the answer. Next question, सूर्य को असीमित ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है? स्रोत means source. Okay, so why is sun said to be the unlimited energy giver? असीमित ऊर्जा. Okay, answer is अक्षय ऊर्जा का स्रोत होने से. वन आंसर इज अक्षय ऊर्जा का स्रोत होने से, इट इज़ इटर्नल एनर्जी. ऊर्जा की कमी को पूरा करने की क्षमता होने के कारण. क्षमता एफिशिएंसी, इट हैज़ द एफिशिएंसी टू रिमूव द लैकिंग वी हैव ऑफ एनर्जी. इफ दिस सिस्टम कम्स, वट एवर एनर्जी वी लैक, दैट विल बी गॉन. दैट इज द आंसर. सी फॉर 1 mark you can just write some 2 sentences. And if it is for 2 mark, you can write 2 to 3 sentences. For passage, I'm telling, okay? This is only for passage. Okay. Next question, नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से किस प्रकार भिन्न है? How is it different? How is nuclear fusion different from fossil fuel? Okay. So the answer is स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होने से, you get clean energy with it. पर्यावरण की सुरक्षा, good environment. जैविक ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय. सॉरी, दिस इज मोर ट्रस्टवर्दी. दैट्स ऑल. सी, I'm sorry, I forgot to tell you, you will get the answer key below the question paper. Okay, I'll be uploading the question paper for you and you will get the answer key when you scroll down. Keep scrolling and you'll get it. Okay. Now we move on to our next part, Khandaka, which most of you are scared of because we have no MCQs. That is the information we have got till now. Okay, it might change. Okay, here it is on Vyakaran, grammar. See, let me tell you one thing. Just learn the definitions of all the grammar portion you have with examples. Don't leave the example. Then I think to a certain extent you can tackle the grammar portion easily. Okay, let's move on to the first question. You can see the marks here also. 4 into 1, 4 marks total for each grammar. Okay, पदबंध, starting with पदबंध. पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4. फर्स्ट वन, वजीर अली की जांबाजी और साहसिक कारनामों से सभी परिचित थे. एक्सक्यूज मी, सॉरी. वजीर अली की जांबाजी और साहसिक कारनामे मीन्स, जांबाजी मीन्स जान पर खेलने वाला, हु इज़ वेरी रेडी टू रिस्क हिज लाइफ. Now, Wazir Ali was such a person who was ready to risk his life. And Sahasik Karname, he was very adventurous person. से सभी परिचित है, everyone knew about it. वाक्य में विशेषण पदबंध चुनकर लिखिए. We have to choose a विशेषण पदबंध. What is विशेषण पदबंध? A पदबंध that describes noun or a pronoun. Right? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं. Right? So you tell me what is the answer here? Very good, it is जांबाजी और साहसिक कारनामे. It is describing whom? Wazir Ali, which is a noun. Okay. So moving on to the next question. किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है? उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए. So from a sentence, how do we identify the संज्ञा पदबंध? You have to give an example also. Okay. So in the answer key, your answer is जिस वाक्य में संज्ञा प्रमुख पद के रूप में प्रयुक्त होता है. That is main
word. If Sangya is the main word in a sentence that is highlighted, then it is Sangya Padband. And they have given example, Ayodhya ke Raja Ram bade pratapi the. And they have underlined Ayodhya ke Raja Ram. Ram is a noun. I always tell my students, look at the last word in your underline. If it is a noun or a pronoun, if it is a noun, then Sangya Padband. If it is a pronoun, Sarvanam Padband. Now in this, they have underlined till Ram. Ram is a noun, so it is Sangya Padband. Clear? Okay. Next question. सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं? वाक्य में रेखांकित पदबंध. So, the one who helps everyone, you are the one, okay, helping everyone. Why are you udas? Why are you sad? Look at the last word in the dash. It's aap. Aap is a pronoun, you. Right. So it is what? Very good. It's Sarvanam Padband. Next question. मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ. I playfully just pass the class. वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए. So you can just choose any random word from this sentence. You can highlight and you can give the padband name. Okay. Padband is खेलते कूदते. They have chosen. Of course, it is what? Kriya Padband. Kriya Visheshan Padband. Sorry. Kriya Visheshan. Now how? Let's see. मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ. यहाँ पास कर लेना is kriya here. Okay. Now how do you pass? खेलते कूदते. So when a kriya is described and that portion is underlined, it is kriya Visheshan Padband. That's why खेलते कूदते is a kriya Visheshan, because it is describing the kriya action. Okay. Last question from Padband. क्रिया पदबंध का एक दो उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. Just you will make a sentence with that, and that is what they're saying. क्रिया पदबंध. Look at the उदाहरण they have given is आंदोलनकारी मॉन्यूमेंट की ओर दौड़ता चला गया. You can write any sentence. Okay, this is a little difficult if you feel. Just make your very easy. I can tell you like सीता खाना खा रही है. Underline खा रही है. Finish. क्रिया पदबंध. See? You can write your own easy ones. Okay? So you know what is Kriya Padband, the action words. Mostly it comes at the end of the sentence. Finish. Moving on to our next part of the grammar question. रचना के आधार पे वाक्य भेद. First question. दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा. वाक्य का भेद लिखिए. Write the classification. So you can underline, as I said, no, sorry, you don't have to underline. Okay, I'm sorry. You have to just tell the bhed. Of course, it is Saral Padband. Again, I'm still in the hangover of Padband. I'm really sorry. It is Saral Vakya because there is no words that signifies Mishra Vakya or Sayukt Vakya. It directly actually points out towards Saral Vakya. There's no grammar in it. See, Rachna ke aadhar pe Vakya Ved, you can see Dada ko तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा. Okay. So here there can be a misunderstanding or a confusion, but ma'am, there is or over here. So it should be Sanyukta Vakya, right? Okay, let me tell you here. Dada ko tar dene ke siva tumhe. It is not a complete sentence. Is it a complete sentence? No. If you want a Sanyukta Vakya, then both the side of or should have a complete sentence, independent sentence. If it is not independent sentence, then don't worry. Then how can this be a Saral Vakya? Okay? No, don't think like that. Just think that, see, before or and after or, do I get an independent sentence? No, then this is Saral Vakya. Anyway, it's not Mishra Vakya. There are no words of Mishra Vakya in it. Then it is Saral Vakya. Next one. भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी. संयुक्त में रूपांतरण. How will you convert? भीड़ की अधिकता थी. भीड़ means crowd. अधिकता means very huge crowd. इसलिए पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी. जुलूस means rally. So police couldn't stop the rally. इसलिए came. So of course you have converted into संयुक्त वाक्य. See here you can see भीड़ की अधिकता थी. It's an independent sentence. पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी. It is another independent sentence. So you know it is संयुक्त वाक्य. That is what I said in the previous question. Though there is or, but the before and after sentence of or is not independent. So just write in Saral Vakya.
I hope it's clear now. Okay, next question. उदाहरण द्वारा सरल एवं मिश्र में अंतर स्पष्ट कीजिए. डिफरेंस, okay, between सरल and संयुक्त with example. सरल, they have given सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे. मिश्र, जब सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे तब लोगों में उत्साह भर जाता था. See, this is the difference between Saral and Mishra. They have shown with an example. You can give any simple example. Just learn and keep, I would say. Learn one simple example of every grammar portion. Use that everywhere. Okay? Next question. संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए. रोल ऑफ समुच्चय बोधक अव्यय. Okay? Role of भूमिका means role. Okay? Now, what is samuchay bodhak avyay? Conjunctions, joining words. What is the role of joining words in संयुक्त वाक्य? दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है. I'll tell you the meaning. दो स्वतंत्र वाक्य, two independent sentences जोड़ने पर, when you join them using समुच्चय बोधक अव्यय, that is conjunctions or joining words, then it becomes a संयुक्त वाक्य. So that is the role of these conjunctions. Clear? Next question, last question in this one. गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा. गायन, one who is singing, was so inspiring that he started losing his सुध बुध, his consciousness. वाक्य का भेद बताते हुए कारण. What is the भेद here? Any guess? Just look. Yes? What it must be? Okay, I'll tell you. गायन इतना प्रभावी था कि. Okay, so the sentence is not complete. It is depending. So it is Mishra Vakya. And ki is anyway there in your Mishra Vakya words. If you see, there is ki also in that. So, of course, looking at the ki itself, you know it is Mishra Vakya. But still, you have to read the sentence and check whether it is independent. Okay? Okay, so that is the end of our Rachna ke aadhar pe. Now, next we have Samas. Again, 4 marks in total. समास पर आधारित 5 प्रश्न. ओके. सामासिक पद अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है? हाउ इज सामासिक पद डिफरेंट फ्रॉम अन्य डिफरेंट अदर ग्रामर पद इज द क्वेश्चन. लुक एट द आंसर. इन योर आंसर की यू विल फाइंड इट. अन्य व्याकरणिक पदों में विग्रह करने पर विशेष अर्थ उत्पन्न नहीं होता, जबकि सामासिक पद के विग्रह से विशेष अर्थ ध्वनि होता है. सो व्हेन यू विग्रह, व्हेन यू सेपरेट इन अदर ग्रामर, व्हेन यू सेपरेट द वर्ड्स, there will be no special meaning in it. But in Samasik Pad, there will be a meaning in it. I'll give you an example. It's not here. Raja, Rajputra. Raja ka putra. Right? Now, Raja ka putra, there is a meaning for that. Right? Rajputra, you did Vigraha, you separated. It has a meaning. Son of king. Raja ka putra. It has a meaning. That is what they're saying. In Samasik Pad, when you do Vigraha, uska arth hota hai. It has a special meaning for it. That's all. Next question. तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए. What is पूर्व पद in Rajputra? Raj will be the Raja will be the पूर्व पद, Putra will be the उत्तर पद. Right? That is पूर्व पद उत्तर पद. And I've also, I don't know if I told when I was explaining Samas video. In that, see, whenever you learn Samas, you learn the definition and the example. And also please look, in each समास they are telling if पूर्व पद is important, या फिर उत्तर पद प्रधान होता है, या फिर दोनों प्रधान होते हैं, या फिर दोनों ही प्रधान नहीं होते. That also you should be very careful. That also can come as a question. Okay? See here they asked you what is the role of पूर्व पद and उत्तर पद in तत्पुरुष समास. So they are asking whether it is weak or strong. Any one of them is strong. That is what you have to explain. So for that you have to know. That is why I said तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है या फिर प्रमुख होता है. Important. Okay? Example, Rajputra, Raja ka putra, as I told. Next question. Okay. यथाशक्ति अव्यय भाव समास है. कैसे? We know यथा is उपसर्ग, so of course it is अव्यय भाव समास. Anyway, यथाशक्ति में प्रथम पद यथा है जो अव्यय पद है. What is अव्यय? The word that doesn't change. Like yatha doesn't become yathi. Does it become? If the next word is a female, do you change the word yatha into yathi? No. No matter what the ling of the next word or the sentence is, yatha will be yatha. The word that doesn't change with ling and all is called avyay. That is what they're saying. So it is avyay bhav samas.
Okay, next question. त्रिलोकनाथ समासिक पद का विग्रह करते हुए भेद. You have to vigrah it and say the भेद also, classification. त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के नाथ है जो. Who is that? Pointing out to God Vishnu. So it is Bahuvrihi Samas. The ruler of all the teen lok. Who is it? Vishnu, Bahuvrihi Samas. Okay? You don't have to write Vishnu. It's okay. See, you don't have to write that. You can just do the vigrah and write the bhed. That's enough. नेक्स्ट क्वेश्चन. द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए. आंसर. द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है. वी नो दैट. संख्यावाची नंबर. ऑलवेज द पूर्व पद विल बी नंबर. एग्जाम्पल त्रिकोण, चौराहा, एट्सेट्रा. एनी यू कैन गिव. एनी. ओके. Now we move on to the last part in grammar, muhavra. Okay, muhavra is always something that students are very scared of, but here I've seen that questions are actually comparatively easy. First one, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है. In order to be चयनित, in order to be elected in Indian प्रशासनिक, okay, Indian authority, डैश करनी पड़ती है. What should we do? Any guess? It is रात दिन एक करना पड़ता है. You can use another also muhavres which gives the meaning you have to put a lot of effort. मेहनत करना पड़ता है. That is रात दिन एक करना पड़ता है. Next one. समुद्र किनारे शाम को तंतारा रोज वामिरों की डैश था. Very easy. बांट जोहता था. What is बांट जोहना? इंतज़ार करना. Waiting. नेक्स्ट. शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया, पारिश्रमिक पूरा एडवांस. पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. यू हैव टू सेलेक्ट द मुहावरा पोर्शन इन दिस सेंटेंस एंड मेक अनदर सेंटेंस आउट ऑफ इट. कैन यू मेक इट? शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा. येस, मुरझाया हुआ चेहरा. मीनिंग इज सैड फेस. नाउ मेक अ सेंटेंस. परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं आने पर विद्यार्थियों का चेहरा मुरझा जाता है. हियर इट इज़ गिवन व्हेन द एग्जाम रिजल्ट इज़ नॉट अनुकूल, नॉट गुड, स्टूडेंट्स फेस मुरझा जाता है, फील सैड. यू कैन मेक एनी सेंटेंस. ओके. काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू मुहावरे? सी, दिस इज द पैटर्न. यू कैन सी हाउ डिफरेंटली क्वेश्चंस कैन कम. ओके. काम तमाम कर देना मीन्स ख़त्म कर देना, मीन्स टू किल समवन. धूल में मिला देना मीन्स शान में दाग लगा देना. या फिर इज्जत उछालना, यू कैन से, मीन्स टू इंसल्ट समवन. दैट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ इट. That's all. That is the difference. Just give the meaning of both of them. You have given the difference. 1 mark, no? That is enough. Next. निराशा के बादल फटना. मुहावरे का वाक्य बनाइए. You have to make a sentence out of this. निराशा के बादल फटना means sadness. You were very sad initially, then eventually it just goes away. That is the meaning. Look at the sentence they have given. अधिक मेहनत करने के नाम सुनकर जो निराशा छोटे भाई को होती थी, थोड़ी देर बाद स्वतः निराशा के बादल फटने लगते. सो इनिशियली इन बड़े भाई सब चैप्टर, छोटा भाई यूज टू फील व्हेन ही गेट लॉट ऑफ स्कोल्डिंग्स एंड ऑल, ही सीज ओ आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. ओके. अधिक मेहनत करना होगा. एंड देन विद इन फ्यू टाइम एवरीथिंग गॉन. ओके. नो सैडनेस. ओके. नो एफर्ट पुटिंग थिंग, नथिंग. तो कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद स्वतः ऑन हिज ओन निराशा के बादल फटने लगते हैं. ओके. You can make your own sentence if you know the meanings. That's all. We end here the Khandakha grammar portion also. Now next 2 portions you have to wait for my next video. Okay? Bye-bye.